It's called it's called word responsibility. क्या बोलते हैं और poem the poet personified the mind. Poem that same को person को person person is the figure of इसको लिख सकते हैं also important. It is a figure of speech idea or strength or क्या है personification it is a figure of idea or a thing or चीज आप चावल में पढ़ अलंकार पर शब्द कलर मानकरण अधिकार सिमिलर वही personification तो मानकरण अलंकार वो है personification तो जैसे आपको पता हो मानकरण अधिकार अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या होता है एक आइडिया सोच को या फिर किसी एक चीज कोई भी एक कौन जो क्या भी एट्रीब्यूट है ना मतलब एक इंसान का एक ह्यूमन का जो क्वालिटीज होता है वो एक जब तो हम लोग करते हैं डाल देते हैं या फिर किसी आइडिया में उसको जब इंसान की तरह treat करते हैं, या फिर जब इंसान को उसको हम आइडिया से जब रिलेट करके उसको ट्रीट करते हैं तो इंसान को वहाँ क्या होता है वो पर्सनिफिकेशन तो वही वर्ड इस पोएम में और यहाँ पे तो पेन द रेन रेन को पर्सनिफाई मतलब बारिश को क्या कर रहे हैं वो एक इंसान समझ करके बात कर रहे हैं दिस इज ऑल्सो अ कॉन्वर्सेशनल पोएम पोएम
of poet with poem में क्या है conversation बात है तो पोएट के बीच यानी कि जो कवि है कवि को वॉल्ट विटमैन तो वॉल्ट विटमैन और इन के बीच बारिश के बीच इन दोनों का जो कॉन्वर्सेशन है इस पोएम को कॉन्वर्सेशन तो बातचीत कैसे कर सकते हैं इंसान के साथ कर सकते नहीं कर सकते अगर किसी के साथ कर रहे हैं क्या कर सकते पर्सनिफाई ना ये समझना तो व्हाट इज पर्सनिफिकेशन तो अभी तक हम लोग समराइज कर देते अभी तक जो भी कर वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट और वॉल्ट कहाँ के पोएट थे अमेरिकन पोएट वॉल्ट पोएट और ये जो कविता है तो कविता एक बुक है जिसमें बहुत अच्छे पोएम सबका एक कलेक्शन पोएम का कलेक्शन और वो चीज बुक में पोएम को द वॉइस ऑफ द बाद हम क्या बताएं कि पोएम में क्या किया है द पोएट हैज पोएट का इनको पर्सनिफाई तो एक की तरह ध्यान की तरह करेंगे इससे बात करते हैं पर्सनिफिकेशन फिर मैंने बताया दैट इट इज अ फिगर ऑफ आइडिया और ह्यूमन एस्पेक्ट और पर्सनिफिकेशन क्या है क्या करते हैं एक आइडिया को या फिर क्या तरह से ह्यूमन ह्यूमन एस्पेक्ट को क्या बोलते हैं पोएट और स्टार्ट करेंगे पोएम एंड यू आर डाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग क्लाउड तो पहला लाइन क्या है एंड यू आर डाउ का मतलब क्या आर डाउ तो सबसे पहला लाइन क्या है आर डाउ आर डाउ आर डाउ आर डाउ आर आर एक होल्डिंग का पैटर्न पहले आर आर डाउ तो फर्स्ट लाइन है हु आर डाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग here poet is talking saying that he asked us question are you? सवाल 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 क्या था हु आर यू कौन हो whom did he question क्वेश्चन किया उन्होंने said I to the soft falling cloud क्वेश्चन soft falling cloud बारिश जो अच्छी लग रही है soft falling तो उन्होंने क्वेश्चन आर which seems to tell gave me an answer as the answer and very strange is poet uh, surprised by hearing an answer from the question भी किया रहे question also answered it as they are translated or they the brain translated अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे
ये थर्ड लाइन पोएम का, यहाँ से रेन का अपना वॉइस है, इट इज द वॉइस ऑफ द रेन, द रेन इज टॉकिंग. So what does the rain say? I am the poem of earth. What does it say? I poem कौन हूँ? तो मैं अर्थ की कविता हूँ. I am the poem of earth. The poem of. अब यहाँ एक तरह of earth. यहाँ पे कौन सी metaphor? What is metaphor now? तो अब मेटाफर के बारे में हम लोग जानेंगे. पहले मैंने बताया पर्सन मेटाफर एक है. मेटाफर क्या है? तो कॉन्सेप्ट that comparison that are alive but that are not alive but have some in common. Metaphor क्या है? So it is a figure of speech that is to make a comparison between things that are not alive but do have something in common. तो क्या है ये फिगर ऑफ स्पीच? तो एक कंपैरिजन कर, दो चीजों के कंपैरिजन करने जो कि सेम नहीं, दैट आर नॉट अलाइव, जो कि एक जैसे नहीं है बट डू हैव समथिंग, बट उन लोगों के पास क्या है, कुछ कॉमन चीज, कॉमन क्वालिटीज सेम. तो उन दोनों को कंपेयर करके, जब उन दोनों को कंपेयर कर तो इसका यूज होता है मेटाफर. तो यहाँ मेटाफर क्या लाइन? I am the poem of earth. Who is saying this? That the rain is. तो रेन क्या बोल रहे हैं? मैं अर्थ का पोएम हूँ. बट अगर लिटरली लिटरल मीनिंग में इसका देखते नहीं, रेन क्या है? पोएम, अर्थ का पोएम नहीं है, तो करेक्ट नहीं है. बट वो क्या कर रहा है? अपने आप को कंपेयर कर रहा है. कौन? रेन. क्या कंपेयर कर रहा है? पोएम से. रेन को पोएम से कंपेयर किया गया, जो कि अलग है, जो कि अलग अलग. एक रेन अलग, लेकिन यहाँ एक कंपैरिजन किया, क्वालिटीज को सिमिलर देखते हैं. ठीक है, रेन और पोएम के क्वालिटीज को एक जैसा देखते हुए दोनों को कंपेयर किया गया. वो मेटाफर. हम बता देते हैं make a comparison that's not alike but do have something common. Feature which is to make a comparison.
तो कहाँ यूज किया जाता है इसका? एक दो चीजों के बीच कंपैरिजन, दोनों का तुलना कर, दैट आर नॉट अलाइक, दैट आर नॉट सेम। तो जो दो चीजें आपस में बिल्कुल भी एक जैसी नहीं, बट टू हैव सम, बट क्या होता है उनके अंदर कुछ क्वालिटीज सिमिलर लगे एक दूसरे के, तो कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर जब करेंगे तो वहाँ क्या बोलेंगे? मेटाफर, मेटाफर फिगर ऑफ का हुआ। तो अब हम इसके पोएम पे आते हैं। तो व्हाट डज द रेन सेड दैट आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो रेन की वॉइस, आवाज थी, व्हाट डज इट रिप्लाई? दैट आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, eternal I rise, impalpable out of the land, and the bottomless upward to heaven, when vague forms altogether change, yet the same. I descend to lay the gods at me, the slayers of the globe, and all that in them without but seeds of latent unborn. तो यहाँ पे सेम क्या बता रहे हैं? What, what is it implying? That eternal I rise, impalpable out of the land and bottom. That is eternal, eternal. Rain, eternal, eternal. So rain क्या है? That is eternal. और continue forever, forever. Yes, eternal. It is eternal. I rise impalpable, है ना? I rise impalpable. सेम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? I rise मतलब मैं ऊपर उठ रहा हूँ. Impalpable, impalpable मतलब not be touched. Palpable, touch. तो रेन कैसे ऊपर उठता है? जब इवेपोरेट होता है तो दैट कैन नॉट बी टच. इवेपोरेशन के टाइम आप रेन टच नहीं कर सकते, वाटर टच. So here it is saying that I am eternal, eternally I rise impalpable out of the land. तो वो अर्थ से, धरती से ऊपर उठता है. It cannot be touched and the bottomless. और कहाँ से आता है? Bottomless, समुद्र की गहराई से. Bottomless का बेस नहीं है, बॉटम नहीं. ठीक है, तो समुद्र हम सभी जानते हैं बहुत गहरा होता है. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे, पोएट क्या बता रहे हैं? रेन rises from the uh, land and also the bottomless sea, से वो ऊपर उठता है. तो ये जो लाइन eternal I rise impalpable out of the land and the bottom के बारे में इवेपोरेशन को प्रेजेंट किया गया है, इसलिए प्रेजेंट किया गया है इस लाइन. Eternal I rise, palpable out of the land and the bottomless. So, अब लाइन है upward to heaven, when vaguely forms altogether same and yet the same. फिर क्या बोल रेन आगे क्या बोलता है? That upward to heaven. So where does it rise? कहाँ उठता है? Upward to heaven. Heaven यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? स्काई के लिए. हेवन का यहाँ पे मतलब स्काई है. ठीक है, तो कहाँ जाता है? राइज हो करके, उठ करके कहाँ जाता है? सीधा आसमान में, आकाश में जाता है. वेन का मतलब फ्रॉम देयर. हेवन, राइज, तो जब वहां से नीचे उठता है धरती से, पानी से, समुद्र से, और उसके बाद कहाँ जाता, ऊपर जाता है.
from where they be formed. They are unclear. They be from the first they just unclear. So unclear they be formed. They be formed एक जब फॉर्म होता है तो हमें पता है जब इवेपोरेट होता है तो ऊपर जाकर क्या होता है बादल बनते हैं तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस बताया जा रहा है इवेपोरेट लाइन में अपवर्ड टू हेवन विल टेक फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज yet the same यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है कौन जो इस लाइन जो है क्या बता रहे हैं कौन सा प्रोसेस कंडेंसेशन का तो वो क्या बोलते हैं बारिश का आंसर क्या I am obviously everlasting. I am sure I cannot tell, but just to evaporate the so it is baby here. This formed to a form of cloud. बादल बन जाता है all together and yet the same. All together change and yet the same. I descend to lay the dross atomy dust layers of the globe. To descend. I descend. Then क्या होता है? डाउन वो नीचे आता बादल बन जाने के बाद क्या होता है बारिश होती है द रेन कम्स डाउन टू लीव द ड्रॉट क्या करना टू लीव द वॉश लीव द वॉश एटमीज का मतलब और हम लिख देते हैं एटमीज का मतलब हुआ टाइनी पार्टिकल तो बारिश जो है वो क्या होता है कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन क्या हो नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है प्रेसिपिटेशन तो जो बारिश होती है वो नीचे बारिश जब गिरती है तो वो क्या करता है कि वो सभी जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उसको वॉश कर देता है पूरे अर्थ को वॉश कर देता है एंड इट गिव्स अ न्यू लाइफ टू द अर्थ डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड इट it cleanses the dust layer of globe and all that in them without me were seeds only latent unborn और फिर next line क्या है यहाँ पे that all that in them without me were seeds only so the rain is saying that without me the earth has only seeds latent and unborn latent means hidden LATENT latent का मतलब है hidden तो क्या बोलता है मेरे बिना द रेन इज सेइंग कि मेरे बिना अर्थ पे क्या है सब चीजें जो जो सीड्स हैं जो न्यू लाइफ है वो क्या है हिडन है एंड इट इज अनबॉर्न मतलब वो सब अभी अनबॉर्न है सीड्स जो है वो अभी जन्म नहीं ले पाए हैं है ना सब कुछ अनबॉर्न है तो ऑब्वियसली विदाउट रेन एवरीथिंग बिकम्स डेड है ना बारिश बहुत जरूरी है लोगों के लिए पूरे धरती के लिए बारिश बहुत जरूरी है तो द रेन इज सेइंग हियर कि मेरे बिना without me everything is dead and everything is hidden the life is hidden on the earth and forever by day and night I give back life to my own origin and forever as it has already said in the fourth line that eternal it is eternal तो ये क्या करता है forever ये हमेशा के लिए by day and night
either it is day or night, I give back life to my own origin. और ये क्या बोल रहा है? That I provide life, I give life to my own origin. यहाँ पे own origin क्या होगा? रेन का own origin क्या होगा? अर्थ. So what is it saying? The rain is saying here that every time and forever I am giving, I am providing life on earth, I am providing life to my own origin and make pure and beautify it. So it makes pure. Obviously the rain makes pure and beautify our earth. क्या करता है? बारिश जब होती है तो everything gets washed away, सब कुछ clean दिखाई देता है and it becomes beautiful due to rain. So यहाँ पे till now we have seen that it is the earth, it is the rain which is saying, it is the earth which is talking to the poet, and it is saying that yes, I am important. It is giving an impression of its own importance to the earth, है ना? अपना खुद का importance क्या है उसका अर्थ पे, और अर्थ में लाइफ चलने के लिए, लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंस है रेन का, वो यहाँ पे पोएट को बता रहा है रेन. And why it is talking with the poet? Because in the first line the poet has asked a question, and what was the question? Who art thou? Means who are you? So the rain is replying to his question. And make pure and beautify it. So now these two lines, the last two lines which is in bracket, it is the thinking of, it is the thought of the poet. And what is he saying? That for song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. So ये जो दो line है last poem का, with these two lines the poet is comparing the rain with poem, poetry, है ना? वो rain को और poetry को compare कर रहे हैं. What is he saying? For song जो पोएट्री होता है वो भी क्या होता है? अपने बर्थ प्लेस से, मतलब पोएट के माइंड से, पोएट के इंस्पिरेशन से निकलता है. एंड आफ्टर फुलफिलमेंट का मतलब है जब काम कंप्लीट हो जाए, वर्क डन, जब काम खत्म हो जाए, तो आफ्टर फुलफिलमेंट व्हाट इज वंडरिंग, रेक्ड और अनरेक्ड. तो जब एक पोएट, कोई भी पोएट, जिस तरह से यहाँ पे जो हमने देखा, जो 3 स्टेप देखा वाटर साइकिल का, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, किस तरह से रेन अपने आप को अपना डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि मैं कैसे इस धरती पे आता हूँ, यहाँ से फिर जाता हूँ. और ये जो प्रोसेस है ये क्या है? एवरलास्टिंग है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है. इट इज फॉर फॉरएवर, ये हमेशा. सिमिलरली जैसे जिस तरह से रेन, जो रेन वाटर वो बॉटमलेस सी समुद्र से ऊपर उठता है, सिमिलरली द आइडियाज और द थॉट्स जो पोएट के अंदर होता है, किसी पोएट के अंदर होता है, वो काफी जगह से घूम करके, बहुत सारे इंस्पिरेशंस लेकर के, बहुत डीप डाउन उसके हार्ट में जाकर के, पोएट के हार्ट में जाके वो थॉट्स वहां से बाहर निकलते. इस तरह से रेन इवेपोरेट होता है, उसी तरह से थॉट्स होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, जो पोएट अपने पोएम के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो काफी अंदर से, उनके सोल से निकलता है, हार्ट से निकलता है पोएट से. और वो फिर क्या होता है, जिस तरह से फिर रेन एक्यूमुलेट होते हैं एक जगह पे, इवेपोरेट करके, वो सारे आइडियाज क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं पोएट के माइंड में, और फिर वो पेन से पेपर पे निकलते हैं. ठीक है. और सिविल जिस तरह से फिर जब बारिश बन करके, जो वाटर है जो बारिश बन करके धरती पे गिरती, so it provide life to all the earth and the creatures of the earth. So similarly the poems also, it also provide life to humans. अब कैसे ये life provide करता है? So as we all know that the mind is the most important part of our body. So in order to keep our mind healthy, we need some good thoughts. हम लोगों को अच्छी सोच अपने दिमाग में डालना जरूरी है, to keep our mind healthy.
तो पोएट्स कैसे हम हमारा हेल्प करते हैं, तो थ्रू पोएट्री, वो पोएट्री के थ्रू अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को जो रीडर्स होते हैं तक पहुंचाते हैं. इट प्रोवाइड अस, what does it provide us? It provide us a positive energy. It provide us good thoughts.